Bismillahirrahmanirrahim. Mrs. Naudeen, 30 years of age, educated till 5th grade, housewife, married to Muhammad Manzoor, resident of Faisalabad, admitted via outpatient department of THQ Hospital, Ukada on 24th of December 2020 with uh, with presenting complaint of uh, irregular vaginal bleeding from last 1 year and continuous vaginal bleeding from last 12 days. My patient was in usual state of health 1 year back, and she was having a regular menstrual cycle of 5 by 28 days with average flow, soaking 2 to 3 homemade pads per day with no history of intermenstrual postcoital bleeding, dysmenorrhea, dyspareunia, and there is no history of any passage of clots or flooding. However, from last 1 year, her menstrual pattern has been changed, and there is no regular menstrual period. She bleeds for 1 month. She bleeds for in 1 month for 20 to 25 days and does not bleed in the second month. During the bleeding days, there is the history of passage of clots along with flooding. However, there is no history of dysmenorrhea, intermenstrual and postcoital bleeding, and there is no history. It is associated with dysmenorrhea. The pain is moderate in intensity, dull in character, progressive in nature, radiating towards back and legs, and she has to take some oral analgesics for relief of the pain, and it is a relief towards the end of the menstruation. However, there is no history. There is also history of progressive shortness of breath and easy fatigability. But there is no history of any chest pain radiating towards the arm. And my patient is having adequate diet, and there is no history of which is rich in fruit, milk, and meat. There is no history of pica intake, barefoot walking, oral ulcers, chronic diarrhea, typhoid, TB, or any other constipation alternating with diarrhea. And there is no history of foul smelling vaginal discharge, fever, cough, short night sweats, contact with TB person, any mass coming out of vagina, anorexia, weight loss, no history of personal or family history of endometrial, colorectal, or breast carcinoma, no history of any contraception used, no history of hepatitis, thyroid, or uh, typhoid. There is no history of heat or cold intolerance, um, um, easy bruisability, and any feeling of mass abdomen. Regarding her gynecological history, my patient Minark at age of 13 years, and her previous menstrual cycle is already described. Regarding her obstetrical history, she is married for 8 years, para 3 with no miscarriages. All are normal vaginal deliveries at Civil Hospital, Faisalabad, and her last child born is 6 years back. And her last menstrual period in on 16th of December 2020. From then she is bleeding heavily up till now, until admission in this hospital. For this complaint of heavy menstrual bleeding, she hasn't contacted any doctor up till now. But now, when she came to DHQ hospital due to her complaint, her ultrasound and blood and urine investigations were done, and a mass was found to be there according to the patient.
However, she does not know exact localization and nature of that mass. She was admitted for evaluation and workup, and certain medicine has been started for control of her heavy bleeding. She was advised to arrange 1 pint of blood. However, no history of any blood transfusion up till now. Further plan of management and nature and course of disease has not been discussed with my patient. However, my patient's quality of life has been disturbed with this heavy bleeding up till now, and she wants definitive management of her complaint now. Regarding her past medical history, there is no history of diabetes, hypertension, TB, thyroid, asthma, tuberculosis, or ischemic heart disease. Family history is also not significant. In past surgical history is not significant. My patient is non-smoker, non-addict, uh, having normal sleep and appetite, and there is no history of any blood transfusion or any drug allergy. Her husband is a food seller, fruit seller, earning 30 to 35,000 per month, and living in 5 marla house with one earning and six dependent persons. Basic necessities of life are met with difficulty. On examination, a young 35-year-old patient sitting comfortably on couch, well oriented with time, place, and person, with height of 5 feet and weight of 65 kg, making her BMI 24 kg making her BMI 25 kg per meter square. She is pale, however, there is no clubbing pallor. There is no cyanosis, jaundice, clubbing, leukonychia, koilonychia. Uh, 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 Sorry, her pulse is 88 beats per minute with regular with good volume. Blood pressure is 120 by 80. Respiratory rate 16 beats per minute. Temperature 98.6 Fahrenheit. She is pale, however, there is no clubbing, pallor, there is no clubbing, jaundice, leukonychia, koilonychia, orodental hygiene is satisfactory. Thyroid not enlarged. All the accessible lymph nodes are not enlarged, not palpable. There is no spine deformity, no sacral or pedal edema. Both there is normal vesicular breathing with no added sounds. Both breasts are bilaterally symmetrical with normal nipple and areola complex. No mass is palpable in all the four quadrants of the breast. First and second heart sounds are audible with no added sound or murmur heard. On abdominal examination, abdomen is protuberant with centrally placed inverted umbilicus. However, there is no scar marks, stria, prominent veins, or pulsations. 16 into 12 centimeter mass is abdomen is non-tender. A 16 into 12 centimeter mass is felt in the uh, right iliac fossa, which is uh, smooth in which is soft in consistency with regular surface, smooth margins, mobile from side to side, non-tender. Lower limit is reachable, and it can be felt separately from the uterus. And however, there is no viscomegaly, and no bruit is uh, there is no shifting dullness. Percussion note is dull over the mass. However, it is resonant all over the other abdomen, and there is no shifting dullness. And on vaginal examination, vulva is healthy looking with normal adult hair distribution, with mild amount of bleeding seen coming through the introitus. On per speculum examination, cervix normal looking, with the mild bleeding coming through the os, and on a bimanual examination, uterus is anteverted, 10 week size, mobile, and fullness is felt in the right adnexa,
which is corresponding with the abdominal findings. And left adnexa is normal, and left adnexa is normal. जी डॉक्टर साहब. Ma'am, kindly give me blood group with RH factor. A positive. Her complete blood count with date in which I need hemoglobin in gram per deciliter. Hemoglobin Total 7.5 gram per deciliter. TLC platelets normal. uh, her I need her hepatitis B surface antigen and anti-HCV antibodies. Hepatitis B positive. Her is it by screening or by ELISA? By ELISA. Okay. Madam, kindly give me her urine complete examination in which I need serum bilirubin, AST, and ALT. Sorry, in which I need microscopy and biochemistry. In microscopy, pus cells, and in biochemistry, albumin and urine. Normal urine complete. Okay. Her liver function test in which I need serum bilirubin, ALT, and AST. Also normal. Okay. And her PT, and I also need her prothrombin time and activated partial prothrombin time. Why you need PTA PTT? शादिया हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो इसमें इसका कंप्लीट कोएगुलेशन प्रोफाइल नहीं करवाएंगे. If liver function tests are normal, then is it possible that coagulation will be disturbed? How hepatitis could disturb coagulation? ठीक है, नहीं मांगने फिर पीटीए पीटीटी इसमें इस पेशेंट में. If LFTs are normal, then these are not needed. If liver function is disturbed, then you will go for PTA PTT. Okay. Dr. Shazia, kindly give me her pelvic ultrasound. We'll discuss later. Okay. On the basis of ultrasound, I may need some further investigations. Okay. Her random blood sugar in gram per deciliter. Random blood sugar. जी डॉक्टर शादी. Okay, summarize. डॉक्टर शादी, इसकी रैंडम ब्लड शुगर आपने मुझे देनी है. 120. 35-year-old, para 3 with no miscarriages, resident of Faisalabad, admitted with complaint of irregular heavy vaginal bleeding from last 1 year. She is anemic with hepatitis B surface antigen positive. And on examination, abdomen on examination, there is a 12 into 16 into 12 centimeter size mass with cystic soft consistency, smooth surface, regular margins, mobile from side to side, and there is a mobile from side to side. Lower limit is reachable, and on bimanual examination, uterus is 10 week size, anteverted mobile, moving separately, feeling separately from mass.
and there is a fullness in the right adnexa, left adnexa felt normal. What is your differential diagnosis? On the basis of history, examination, and available investigations, my first provisional diagnosis is What some means the ovarian differential pathology. diagnosis? My provisional diagnosis is ovarian mass, which may be benign in this age group. Which benign mass this can be? In this age group, Dr. Shadia, it can be dermoid cyst, it can be serous cyst adenoma, mucinous cyst adenoma, and it can be any simple cyst, simple Which simple cyst this can be? dermoid cyst. Is नहीं डॉक्टर dermatitis शादी simple सिंपल नहीं हो cyst? सकती, इसका साइज बड़ा है. Then what is नहीं इसका साइज बड़ा है. common age for occurrence of mucinous cyst adenoma? म्यूसिनस cyst adenoma मोस्ट लाइकली यंग एज में ही प्रेजेंट करते हैं. Are you sure? 20 रिप्रोडक्टिव एज. Mucinous. नहीं डॉक्टर शादी, आई एम नॉट श्योर. Okay. What can be the differentials? The other differential can be some malignant ovarian malignant ovarian cyst. Why malignant ovarian cyst? Because the patient is having a heavy menstrual bleeding. It can be it may be some estrogen producing cyst, which is disturbing her menstrual cycle so badly that patient became so much anemic. However, the cause of her anemia may be her hepatitis B surface antigen. However, her LFTs are normal, so coagulation disturbance is less likely. However, जी डॉक्टर शादी, malignancy का कोई उसमें फीचर तो Estrogen नहीं है, secreting tumor this can be. जी डॉक्टर शादी. Estrogen secreting tumor this can be. It can be granulosa cell tumor, Dr. Shadia, can be. However, there is no feature of malignancy in my patient. आवाज नहीं आ रही डॉक्टर शादी. Okay, what can be other Lost में. differentials? जी डॉक्टर शादी. Other differentials can be some डॉक्टर शादिया, मुझे मैं इसमें और डिफरेंशियल्स कैसे डाल सकती हूँ? मुझे ना तो ये फाइब्राइड लग रहा है, बिकॉज ये What is primary क्लियरली problem of मुझे जो your है ना patient? एडनेक्सल मैस लग रहा था. और What is primary problem of your patient? प्राइमरी प्रॉब्लम Hmm. primary problem of my patient is heavy menstrual bleeding. Then what are common causes of heavy menstrual bleeding? Common causes of heavy menstrual bleeding in this age group are fibroid, Okay. and other common problem is some bleeding of endometrial region, which may be due to some endometrial pathology. डॉक्टर शादिया, आपका म्यूट हो जाता है बार बार.
As your patient is having two problems, heavy menstrual bleeding and mass, why not first differential can be some fibroid that is causing heavy menstrual bleeding, and also there can be additional subserosal fibroid also that is pedunculated. And second differential can be तो शायद ये म्यूट हो गया है, प्लीज अनम्यूट कर लें। डॉक्टर शादिया आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर शादिया वो म्यूट हो गया था, मैंने सुना नहीं, देखो काइंडली पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है और मैस है। हैवी डॉक्टर शादिया यूट्रस इज ओनली 10 वीक्स हाई विच इज नॉर्मल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो मैं इस यूट्राइन साइज पे पहला डिफरेंशियल फाइब्राइड रख लूं? सब म्यूकोजल वो तो फाइब्रोइड यहीं पे मुझे पकड़ नहीं लेंगी कि भाई आपकी साइज यूट्रस सब म्यूकोजल वन और सबमिकोजल हो सकता है, fibroid can be present in normal size uterus or not. नहीं वो तो हो सकते हैं। And that mass can't be subserosal fibroid. What is सॉफ्ट और सिस्टिक कंसिस्टेंसी और फ्रीली मोबाइल जो मैस है वो subserosal फाइब्राइड सॉफ्ट freely कंसिस्टेंसी mobile होता है? या नहीं होते? नहीं वो फ्रीली मोबाइल तो बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर साहब सॉफ्ट कंसिस्टेंसी। मैं ये कह रही हूँ कि देखो अगर पेशेंट का प्राइमरी प्रॉब्लम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो वाई कि हम एक रेयर कॉज ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बनाएं और कॉमन कॉजेज ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को बिल्कुल ही छोड़ दें। हाँ, अगर आपके अल्ट्रासाउंड पे भी कुछ नहीं आता, जो आपका सब म्यूकोजल फाइब्राइड है या एंडोमेट्रियल पॉलिप है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो साइज ऑफ यूट्रस को भी इनलार्ज करेंगे। तो हमारा इन आइदर वे पहला डिफरेंशियल फाइब्राइड यूट्रस ही बनेगा। हाँ, अगर सारी यूट्राइन पैथोलॉजीज आपकी एक्सक्लूड हो जाती हैं, then you can say that cyst can be cause of heavy menstrual bleeding in your patient. मुझे तो इस तरह से लगा था कि जैसे सिस्ट की वजह से उसको पेल्विक कंजेस्शन हुई है और पेल्विक कंजेस्शन की वजह से उसको एचएमबी हो रहा है। उसे फीलिंग ऑफ मैस पहले है या एचएमबी पहले है? एचएमबी पहले, फीलिंग ऑफ मैस तो उसको है ही नहीं, वो तो आई नहीं इस कंप्लेन के साथ। तो फिर अगर वो मैस इतना है कि जो पेशेंट को फील भी नहीं हो रहा तो वो उसे प्रॉब्लम कर सकता है। और पेल्विक कंजेशन ड्यू टू मैस इज अ रेयर मैकेनिज्म फॉर ब्लीडिंग या कॉमन मैकेनिज्म है? ना मतलब मैं इस केस में ज्यादा इसीलिए कंफ्यूज थी कि मैस उसका नेकल है, वो उसको हैवी ब्लीडिंग रही है, वो बेचारी एनीमिक होके और आई वो ब्लीडिंग के साथ है, लेकिन उसका था नेकल मैस और वो भी काफी बड़ा और मल्टी लोकुलेटेड और उसे यूट्राइन पैथोलॉजी बिल्कुल कोई नहीं है? एनी फाइब्राइड पॉलिप, एनी एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी? व्हाट इज एज ऑफ योर पेशेंट? उसकी यूट्रस ठीक थी, नॉर्मली अल्ट्रासाउंड पे भी ठीक थी? हाँ जी। देखो इवन इफ अगर कोई पैथोलॉजी नहीं भी है यूट्रस में, स्टिल हम अपने डिफरेंशियल्स में तो कोई प्राइमरी यूट्राइन पैथोलॉजी इंक्लूड करेंगे ना, या नहीं करेंगे? मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि अब इसमें जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ एचएमबी है इस एज ग्रुप में, जाहिर है देखो हमारे जो माइंड में तो यही आता है कि कोई फाइब्रोइड है या पॉलिप है। अगर हमें नहीं भी मिला तो क्या हम अपने डिफरेंशियल्स में फर्स्ट लाइन उनको रखेंगे या फिर हम उस चीज को ही प्रायोरिटी देंगे जो हमें इस एग्जामिनेशन तो पे या आपको नॉर्मल इस साइज तरह यूट्रस मिला है एग्जामिनेशन पे, अल्ट्रासाउंड अभी आपको मिला नहीं है।
जो मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इस एज ग्रुप में या फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, एडिनोमायोसिस है। हम्म। नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस है आपका, एडिनोमायोसिस एक्सक्लूड हो गया, बट आपका नॉर्मल साइज यूट्रस पे फाइब्रॉइड और पॉलिप तो हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है, फिर यही है कि इसलिए वो पहला हमें मतलब डिफरेंशियल कि आपका बनेगा फाइब्रॉइड along जी with जी। some adnexal mass, या इवन हम्म। पहला डिफरेंशियल आपका फाइब्राइड यूट्रस हो सकता है, और दैट मैस कैन बी सबसिरोजा पेडुंकुलेटेड फाइब्राइड as the primary problem or primary complaint of your patient is heavy menstrual bleeding. और जब पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो इसका जी मतलब यह है कि लाइकली पैथोलॉजी इज इन दी यूट्रस. सेकंड डिफरेंशियल आपका कैन बी एडनेक्सल हम्म। मैस. व्हाट इज एज ऑफ योर पेशेंट? 35 years. At 35 years, third differential can be although least likely some endometrial pathology along with adnexal mass. और इस एज में जो कॉमन एडनेक्सल ट्यूमर्स हैं उसमें आपका आता है डर्माइड सिस्ट या सीरस सिस्ट एडिनोमा. म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमास पोस्ट मेनोपॉजल एज में होते हैं. ओके ओके, हाँ ये मेरे माइंड से निकल गया था, ये मैंने पढ़ा था तब। और वो जो सिंपल सिस्ट है, सिंपल सिस्ट तो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होती ही नहीं है. जब हम्म। आपके एग्जामिनेशन पे जी जी, वो सिस्ट का डॉक्टर शादी साइज मुझे पड़ा फौरन है, याद आ गया, तो वो सिंपल मैंने तो आपको वैसे ही बता दिया निकल था। गई. सिर्फ यार ये नहीं कि जी जितने जी। सिस्ट के नाम याद हैं सारे ही बोल दो. नहीं नहीं, सॉरी, वो मुझे नहीं बताना चाहिए, तो वो मैंने आपको फौरन करेक्ट किया था अपने आप को कि नहीं और ये सिंपल हाँ, नहीं है। म्यूसिनस भी नहीं बनता ना, डर्माइड हो सकता है या जी सीरस सिस्ट एडिनोमा. जी जी। मेलिग्नेंट जी में फिर आपका हो सकता है एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर. जर्म सेल और जर्म सेल हो सकते हैं ना. एपिथेलियल का भी इंसिडेंस आफ्टर 40 हाँ, इंक्रीज होना शुरू मेलिग्नेंट हो में सकता जर्म सेल हो सकता है. ओके, हाउ विल यू मैनेज है? ये आपका डिफरेंशियल्स बहुत ही है। पुअर है. बिफोर मैनेजिंग, यार मेरा डिफरेंशियल ही तो डॉक्टर शादी पर है, उधर भी मैं एग्जाम में भी उसने मुझे डिफरेंशियल पे ही बताया। तो डिफरेंशियल सोच डिफरेंशियल समझ भी के बस बताए मैं बनाया ना करें ना. डिफरेंशियल। इसलिए कि देखें, जब पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, एक कॉमन सी बात है कि वो जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहीं पे ही मैनिफेस्ट होगा ना. तो अगर यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है तो आपने सबसे पहले ये सोचना है कि कोई ना कोई मसला यूट्रस में ही है. अगर यूट्रस में बिल्कुल ही कोई कॉज नहीं मिला तो देन आप कहते हैं कि कोई सराउंडिंग प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है मैडम, बिफोर मैनेजिंग माय पेशेंट आई नीड टू कंप्लीट माय इन्वेस्टिगेशन. काइंडली गिव मी हर पेल्विक ही मांगेंगे ना, जब पेल्विक, पेल्विक में कोई यस. बड़ा मैस आएगा तो फिर हम एब्डोमिनल हाँ, मांगेंगे. पेल्विक ही करते हैं. मैडम पेल्विक अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स दे दें काइंडली मुझे. You need on pelvic ultrasound. I want to see the size of the uterus, endometrial thickness, any endometrial, myometrial or adnexal pathology. What is significance of endometrial thickness in your patient? Dr. Shadi, my patient is, although in this age group, the incidence of endometrial pathology is less likely, but because she is presenting with irregular heavy vaginal bleeding from last 1 year, so I also want to see her endometrial thickness as well. If her endometrial thickness is 6 mm, 10 mm and 12 mm, how it will affect your management? Normal range of endometrial thickness until 16 mm, so it will not change my management. Okay. Because in reproductive age group up till 16 mm is normal endometrial thickness. What is reference for this 16 mm? ये कोई टॉक का रेफरेंस था. क्या आपने आज बैठ के ढूंढना है ये कहाँ पे है?
जी मैं ढूंढ लूंगी, मैं If it आपको is सेंड भी less कर। than 16 mm, then will it affect your management or your what are indications of endometrial biopsy? Indications of endometrial biopsy are irregular vaginal bleeding when patient is above 40 years, or when there is failed medical treatment, when there is a history of intermenstrual bleeding, before endometrial ablation, before definitive treatment of a heavy menstrual bleeding like hysterectomy. In this age group, endometrial biopsy is not indicated until there is a history of failed medical treatment. When the patient has taken medical treatment appropriately and she is not responding to medical treatment, then we will go for biopsy. Otherwise, we will not go for endometrial biopsy in this age Okay, how will you manage it? group. क्या था स्कैन की फाइंडिंग से काइंडली फिर ही मैं उसको मैनेज करूंगी. On ultrasound, uterus is normal. 16 into 10 centimeter height and axial cyst. Right at next. Okay. Madam, it is unilateral or unilateral? Yes, other and next is normal. Okay. Is there any solid areas, presence of ascites or any metastasis? 1 into 1 centimeter solid component, no metastasis and ascites. No Doppler blood flow. Is it locular or multilocular? Multilocular. Okay. Madam, I need her tumor markers there as well, in which I need beta HCG, alpha fetoproteins, and LDH in this age group. All tumor markers are normal. Okay. Because first of all, I will counsel the couple regarding her diagnosis that she is having a heavy menstrual